welcome back to my channel. This is me Saima Pirzada from Karachi, Pakistan. Yes. So आज की वीडियो हमारी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज आजकल व्लॉग मतलब कि बहुत सारे इंडिया पे बनते हैं. सो मुझे कुछ व्लॉग्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छे लगते हैं और उनका टाइटल जो होता है ना उसके टाइटल को देखकर और कुछ लोग मुझे सजेशन करते हैं तो उस वीडियोस को देखकर फिर मैं ये करती हूँ कि मैं उस पर रिएक्शन देती हूँ. सो यस, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं कोई व्लॉग पर भी रिएक्शन दूँ. सो आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज की वीडियो है व्हाट आई थॉट अबाउट इंडिया ट्रैवल मूवी. सो ये बहुत ही मज़े की होने वाली है बिकॉज ये इसमें कुछ अपना एक्सपीरियंस बताने वाले हैं ये व्लॉगर. सो बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So it was about a year ago now that my friend Mike and I were planning a 1-month trip through India. Now I had seen beautiful pictures of India, but at the same time I'd also heard stories about how it's dirty and busy. Honestly, I really wasn't sure what to expect going into this trip, but I did know that I wanted to see it for myself. So we ended up booking a pair of tickets to India's largest city, Mumbai, and that is where our crazy adventure began. Are you ready? As ready as I can be. Thank you. We landed in Mumbai around 11 p.m. and within minutes we learned that nothing in India works as it should. We made it. From the lines that we waited in at the airport going through customs to the Ubers that just never showed up, everything in India seemed to work in its own way on its own time. By the time we made it to our hotel, it was like 4 a.m. and the two of us were just super tired. We wanted to get to bed. So we made it into our room and within the first 15 minutes we blew the fuse, so we have no power now. We found a cockroach that's living inside of the AC unit. And yeah, we're in great spirits. At this point, there really wasn't much else that Mike and I could do aside from laugh. We had no idea what we had just gotten ourselves into. Okay, so the first day was rough, but we were sure things would get better, right? Well, after having explored Mumbai for a couple days, our first impressions of the country were just like people had said. It was busy and it was dirty. People, cars, and buses were everywhere running all the time, and for two Canadians, it was a bit of sensory overload. By now, Mike and I were done with the city, and we were beginning to worry about what the rest of our trip was going to look like. Luckily, someone suggested that we hop on a train and head down south to check out the beaches, and Mike and I were all over that. We ended up meeting some cool people, we had some really good conversations, we drank some chai tea, and the train, it dropped us off exactly where we needed to be. Arriving at the beaches turned out to be a breath of fresh air, which is exactly what Mike and I needed after escaping the bustle of India's largest city. It kind of opened our eyes back up after those intimidating first couple days and showed us that there was definitely so much more to uncover during the rest of our trip. Day 10. One of my biggest worries about traveling to India had to be the food situation, as I had heard horror stories about tourists dealing with food poisoning. Coconut chutney and sambal. Yeah. Okay. And what is it? It's like vegetables and okay, and then fermented rice kind of cake things. Cool. Perfect. Thank you. As we continued our trip down the coastline, visiting a bunch of beaches, we eventually caught a plane that headed up north, which is when we experienced the food poisoning. And by we, I mean Mike. I was actually okay throughout our entire month in India, but Mike, on the other hand, he got hit pretty bad. But although the food situation in India can be a bit unsanitary at times, I have to tell you that the Indian food that we ate was some of, if not the best food I have ever had in my entire life. The food in India is world class. I actually spent my entire month eating like a vegetarian, which is not like me at all, but throughout the entire country they prepared food in such a way that I didn't even notice. The flavors, the variety, the ingredients, the culture surrounding their food, everything about it was amazing.
By now, we'd seen multiple cities and been through a couple different Indian states, all of which were vastly different from one another. One thing that reigned true throughout the entire country, no matter what city or what state we were in, was how nice the people that we met were. Seriously, one night Mike and I were walking by a temple when we were invited in to eat dinner with everyone. Another night, we boarded a train that had no stops for food, and I had forgotten to eat. And the family beside us heard that, and they brought me a plate of food. Another time, Mike's motorbike ran out of gas on the side of the road, and rather than driving past him, someone stopped and siphoned gas from their bike into his. We had countless experiences like that, whether we were hanging out on the beaches in the south, taking crazy trains through the mountains, or visiting the temples in the north. Throughout our entire 30 days in India, there was never one time where Mike and I felt unsafe or unwelcome. At this point, we had visited most of the places we wanted to see and done most of the things that we wanted to do. I started thinking about our trip and how after those first couple days, I ended up loving my time in India. I was trying to pinpoint what exactly made me change my mind. And ultimately, I think it comes down to their culture. You see, India is chaotic and things operate differently over there. You don't go to India for that relaxing vacation, which I think is the mindset that I had to kind of leave behind after our first couple days. But though it may not be relaxing, I have never been anywhere so culturally immersive, so kind, and so willing to share what they have, willing to share their incredible country. The immaculate historical sites, the delicious food on every corner, the colorful celebrations, and the beautiful clothing. You can't go to India without experiencing their authentic culture. It runs deep, and it runs through everything they do. By the end of our trip, we were able to put aside those minor annoyances and truly appreciate India for everything that it had to offer. It may not have been a relaxing trip, but it was the exact adventure that we were looking for. If you're heading to India and you have some questions, I've got you covered. After backpacking there for 30 days, I wrote down anything and everything that you may need to know before and during your trip. I put it all into a PDF that you can download to your phone so you have it with you as you travel. You can check it out at noavde.com/store. Thank you so much for watching, my dudes. That was actually the second time I've recorded this thing. The first time, I forgot to turn on the microphone. Yeah. Feels bad. I hope you guys had an amazing holiday season. I know I have, spending lots of time with family and friends. It's been great. There is some exciting stuff coming up very soon, some big changes that are going to be happening in my life, and I cannot wait to take you along on the ride. Anyways, dudes, let me know what you thought of this video down below, and I'll see you guys in another one. अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। इसमें बेसिकली इन लोगों ने अपने ट्रिप के बारे में बताया, जो 1 मंथ का एक्सपीरियंस है इनका इंडिया में। सो बेसिकली जब ये इंडिया में आए और इन्होंने देखा कि इंडिया स्टार्टिंग में तो इनकी थॉट बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसे कि इन्होंने लोगों से सुना था कि इंडिया ऐसा है, बिजी है, डर्टी है, इस तरह का कुछ सुना था। लेकिन जब उन्होंने एक्सप्लोर किया तो वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ का ट्रेडिशन देखा, वहाँ का फूड देखा। सो वहाँ के जो इनके 30 डेज़ थे वो बहुत ही मेमोरेबल गुजरे। सो इन्होंने तो अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बताया है, और नो डाउट बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। जैसे कि मैंने खुद भी कहा है कि यार मुझे भी आई विश कि मैं भी कभी आऊँ और मैं भी एक्सप्लोर करूँ और लोगों से इंटरेक्ट करूँ, वहाँ के लोगों से बातें करूँ, पता चले कि अच्छा लगता है। सो इनकी वीडियो की तरफ आते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट इन्होंने फूड ट्राई किया। सो फूड बहुत ही यमी होता है। सो वाकई में फूड बहुत ही यमी होता है, और मैंने मतलब कि इनके हर फूड, आप स्ट्रीट फूड ले लें, कोई भी किसी भी स्टेट का फूड उठा लें, सारे यमी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। और मतलब कि दुनिया में ना सबसे ज़्यादा जो फूड खाया जाता है ना वो यही, मतलब कि स्पाइसी हम लोग खाना पसंद करते हैं, और नो डाउट बहुत ही यमी फूड होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है टेस्ट में। और जो भी खाता है ना वो बस खाता ज़रूर है, मतलब नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करना चाहता है। सो चाय तो आजकल, मतलब मैंने अंग्रेज़ों को देखा है, पहले वो इतनी चाय नहीं पीते थे, अब वो इतनी ज़्यादा चाय पीने लग गए हैं, इतनी ज़्यादा, जितने भी व्लॉग्स देखे उसमें सारे पीते हैं। इवन तो लंदन की लाली पीती है, और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनको मैंने चाय पीते हुए देखा है। बात करते हैं यहाँ
के लोगों की। सो उन्होंने ट्रेन का एक्सपीरियंस बताया कि ट्रेन में वो खाना लेकर जाना भूल गए थे और उनके साथ में एक फैमिली थी, तो उन्होंने मतलब कि इनको खाना प्रोवाइड किया, मतलब कि अपने खाने में से इनको खाना दिया खाने के लिए। इनकी आई थिंक इनके बाइक में शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो वो इनको CNG तक लाइक पेट्रोल पंप तक लेकर गए थे। सो इस तरह का चीज़ें जो है ना वो हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो विजिटर्स आते हैं उनसे बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट से रहते हैं। सो इन्होंने इस वीडियो में ये बताया है। इंडियन लोग जो है ना वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं और हेल्पफुल भी हैं। इवन दो मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ कि मैंने जब भी कोई भी वीडियो बनाती हूँ, अगर लाइक सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, लिटरली आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना रिस्पॉन्स दिया, तभी मैं आज यहाँ पर बैठकर मैं रेगुलर वीडियोस बनाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखती हूँ, आप लोगों की प्यार मोहब्बत देखती हूँ, आपके कमेंट्स इवन तो देखती हूँ। हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा जब भी बिज़ी होती हूँ, मैं बिज़ी हूँ ना हूँ, बल्कि अभी लास्ट 2 डेज़ में भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। बट येस, मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड करती थी, और जो बहुत ज़्यादा ख़ास कमेंट होता था ना, जिस पे मुझे लगता था कि येस अब इस पर 100% कमेंट कर रिप्लाई देना है, सो उसमें फिर मैं कमेंट पे रिप्लाई दे देती थी। लेकिन यह है कि मोस्टली मैं आप लोगों की कमेंट रीड करती थी। सो आप लोग कभी भी ये मत समझा करें कि मैं आप लोगों की कमेंट जो है वो रीड नहीं करती, या फिर मैं आप लोगों के कमेंट लाइक नहीं कर पाती, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके कमेंट सुनती नहीं हूँ या पढ़ती नहीं हूँ। सो बात करते हैं हेल्पफुल। यस, हेल्पफुल इंडिया में लोग बहुत हैं जो हेल्प करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। सो जैसे ना किसी को वेलकम करना हो ना, तो कोई सीखे तो इंडियन से सीखे, वाकई में बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। मुझे तो बहुत मतलब ये से 100% एग्री। इन्होंने एक और चीज़ कही कि वीडियो जो है ना मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि माइक का थोड़ा इशू हो गया था। सो इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि यार बहुत ही मुश्किल होती है ना वीडियो एडिट करने में, बिकॉज मेरे साथ भी अभी लास्ट डे में ऐसा ही हुआ था कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने 4-5 वीडियोज़ जो है ना वो शूट की थी। सो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी थी, तो अब वो वीडियो का क्या हुआ कि वो वीडियो में माइक का थोड़ा मसला आ गया, तो वो वीडियो जो है वो वॉइसलेस हो गई। सो अब मैंने सोचा कि उस वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर दूं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वॉइस ओवर करती तो एक्सप्रेशन का मज़ा नहीं आता, बिकॉज जो बात करते वक्त एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपको वीडियो देखते वक्त एक्सप्रेशन होते हैं, वो वॉइस ओवर में एक्सप्रेशन नहीं आते। सो मतलब मज़ा नहीं आता, क्योंकि आवाज़ कुछ और होती है, वर्ड्स कुछ और होते हैं और फेस का एक्सप्रेशन कुछ और होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए वो वीडियो मैंने रिमूव कर दी, बिकॉज मुझे सही नहीं लगा। सो ये इस तरह का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह अक्सर मेरे साथ हो जाता है। सो कोई बात नहीं, खैर हो जाता है। लेकिन ये उन्होंने बताया यहाँ की कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हर सिटी में, हर स्टेट में आपको बिल्कुल ही अलग डिफरेंट कल्चर मिलेगा, और काफ़ी हर चीज़ आपको ऑन अ टाइम मिलेगी, अवेलेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग। तो मुझे अच्छा लगा ये वीडियो, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। इनका लिंक जो है वो मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। सो यस, ये हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।